Assalamualaikum everyone. How are you? I hope so. You all are going great and well. So welcome back to my YouTube channel. Welcome back to the video. Welcome back to the lecture and hope so you all would be going great and well. So once again I'm with you with our science lecture. We are going solar system, and previously we learned about solar system and discussed about solar system, dwarf planets and normal planets and the differences, and how many dwarf planets are there, and also outer planets and inner planets, like gas giants and rocky planets. So today we're having something again different, and we're going to learn something different today again. But I want to like, share and subscribe my YouTube channel, and for learning new things and for clearing all the concepts related to all different topics. So I'm again, as you know, here nourished here. So as you know, we are done with English, we're done with Urdu. Now we are going with science, but like my plan changed because moods also change. Like if I'll make this a tough timetable, so if I will have no interest in the subject and I still have to teach that, so it would be difficult. So now onwards I thought that why to not do like this, that we shouldn't we, like whenever I would wanted to represent a topic, I'll do that. Like if I'm having a mood of teaching you science, I'll teach you science. If I have a mood of teaching you maths, I'll teach you maths. If I have a mood of teaching you English or Urdu, I'll teach you that. So now I'm like ending the thing that I said at 4 days each subject. It's very difficult because you guys are also bored by learning each subject every day, because it basically seems different or difficult. So like today I'm teaching you science. Yeah, I own that. And tomorrow I'll also teach you science, because I would just want to you to do this topic solar system complete, so that we can again, that I said that we'll do differently like that. So I'll do that. So today here I'm again with you with solar system. So let's start learning about solar system, as it's very easy and some minor concept I gave you yesterday, like a sun is a star, dwarf planets and all that things. I make you clear that. The ones who have not seen that video, kindly go and watch that video so that you can understand today's video. I also tell you about the belt and cursors and clouders, and also different type of like new things that were taught yesterday. I make you learn about them. So yeah, today once again, solar system. So agenda, today, as you know, we did plants and planets and the characteristics, dwarf planets. These two topics are done, and today we're gonna do asteroids, meteoroids and comets. But let me still wait. Okay, so that means okay. So we are gonna do, in this video we are gonna do asteroids, meteorites and comets. In the next video we're gonna do satellites, natural and artificial satellites, inshallah. So first of all, the third topic we're gonna do, because first one was planets and their characteristics, and then the second one was dwarf planets, and third one is asteroid, meteorites and comets, which we're gonna clear in our today's video. So asteroids, comets and meteorites, or meteorites and comets. So this is how asteroids are used to look, this is how meteorites are used to look, and this is how comets are used to look. First of all, have a look on these three things. So asteroids, comets and meteorites are chunks of rock, ice and metal left from the formation of our solar system 4.6 billion years ago. They are a lot like a fossil record of Earth's early solar system. These are currently about 1.3 million known asteroids and more than 3,800 known comets. So yeah. Now what does it mean? Basically, like asteroids, comets and meteoroids are chunks of rock. Let me tell you what's the meaning of chunks of rock. Sorry. It mostly happens. So I'll tell you what's chunks of rock. Wait. According to Cambridge Dictionary, Cambridge University Press and Assessment, the dry solid part of the Earth's surface, or any large piece of this that sticks up out of the ground or see more at rock. Definition of chunk and rock from the Cambridge English Dictionary, copyright Cambridge University Press. So yeah, it's the same.
That means basically chunks of rock refers to thick or solid piece of Earth's surface. So this is known as chunks of rock. Hope so it would be clear to you guys now. Okay. So hope so it would be clear to you now. So this is like known as the chunks of rock, means thousands of millions of years ago these were present, like these were also known that time. And metal left are from the formation of our solar system, like the metals which were left when our solar system was being formed by Almighty. लाइक मैं उर्दू में कह सकती हूँ कि जो मेटल बच गया था, जो चीज़ें बच गई थी उस वक्त पे वो इस तरह से कुछ इस्तेमाल हुई थी. And 4.6 billion years ago, which means that more than the time when Earth was or solar system was formed. There are a lot like a fossil record of our solar system, which means the fossil records ने क्या कह सकती हो, बहुत पुराने रिकॉर्ड्स में से है हमारे सोलर सिस्टम के बहुत the records which were found very early. There are currently about 1.3 million known asteroids. These are the number of asteroids that we know currently, and this is not this is estimated, it's not like fixed. And more than 3,800 known comets, like we can't say these are exact 3,800, but more than. Okay, so asteroids, an object larger than a meteoroid that revolves around the sun, is made up of rock or metal. So in the definition of asteroid, what first thing you have gonna mention is that an object larger than a meteoroid. Okay, this thing is the first point that you have to mention, an object larger than a meteoroid. Secondly, that revolves around the sun. Papa. Okay, sorry. So, first of all, like an object is larger than a meteoroid is the first point that revolves around the sun. Is the second point, and made up of rock or metal is the third point. So, anything that is larger or any object larger than a meteoroid that revolves around the sun and is made up of rock or metal is known as asteroid. In these 3 points, you can clear the whole definition and whole concept. Okay, they are known as minor planets or planetoids. So first of all, you should also know that what's their nickname or what are they called as. So first of all, they are called as planetoids or minor planets. Okay, they orbit the sun. Between the orbits of Mars and Jupiter is the nearly red flagged flat ring called the asteroid belt. So the between the difference between this orbiting the sun, they orbit Mars and Jupiter, and nearly by a flat we can say ring which is known as asteroid belt. And I'll tell you what an asteroid belt looks like. They are rocky objects with nearly round or irregular shape. Like you can say that they are round, but you can also say that they are irregular, but they are not like square or spherical. They're not like that. Some of them are several hundred kilometer long, while others are much smaller. So कुछ तो ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो कि बहुत छोटे हैं. So then we're having the concept here is meteoroids and meteors. Now these are three different things. First of all, a meteoroid is a small rocky or metallic body in the outer space. So you can say it's whether rocky or it's metal. It's made up of rocks or whether metals in the outer body, in the outer space, which means like बाहर की दुनिया में, out of the earth, in the space, in the vacuum. It has two types. Now अब हमारे पास main type है meteoroid, ठीक है, जिसके further two types हैं. एक तो meteoroid है और उसके बाद meteor है. Meteoroid and the ones which is ending at D is like a meteoroid that is like a small rocky or metallic body in the outer space. And meteoroid, now what is meteoroid? It's a small piece of debris from an object such as a comet, asteroid or meteoroid which originates in the outer space, survives its passage through the atmosphere to reach the surface of the earth. And then we're having meteor. It's the exact opposite of meteoroid, and I'll explain you that right now. So meteoroid, a meteoroid is a solid piece of debris from an object. So debris means from the solar system of an like you can say it a part of an object. So it's like a solid type of piece from the debris of an object such as comet, asteroid or meteoroid. ठीक है, उसके बाद which originates in the outer space, which is present outer space, it means survives its passage through the atmosphere to reach the surface of earth. Now अब ये वो चीज़ है जो कि अर्थ के अंदर इंटर हो सकती है. ये अर्थ का अंदर एटमॉस्फेयर जो है वो इस चीज़ को अपने अंदर आने की इजाज़त देता है. तो वो चीज़ डेब्रिस की या वो पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल डेब्रिस का जिसको जो है वो अर्थ अपने
एटमॉस्फेयर के अंदर जो है इंटर होने की परमिशन देता है, दैट्स नोन एज meteoroid. And then we're having meteor. A meteor is a solid piece of debris from an object such as a comet, asteroid or meteoroid which originates in outer space. यहाँ तक इसकी जो definition है वो same है, but then enters and burns up the atmosphere before reaching the earth surface. अब ये क्या होता है, meteor ना अर्थ के surface एटमॉस्फेयर में इंटर होने से पहले ही फट जाता है, ठीक है। ये अर्थ के सरफेस या एटमॉस्फेयर में इंटर होने से पहले ही बर्न हो जाता है, एक्सप्लोव हो जाता है, या ये जो है वो एक एक्सप्लोजन जो है वो अकर कर देता है, ठीक है। तो अब मेटेरोइड और मेटेओर में ये दो डिफरेंस हैं। अब इनकी मेन टाइप है मेटेरोइड, meteoroid, and meteoroid, which is bit from T. It is like a thing or a space or a solid piece from the debris that is allowed by the Earth's atmosphere to enter, is known as meteoroid, T wala. And then we're having meteor, which is same as, like, it's also a solid piece of debris from an object, same as the comets, asteroids and meteoroids, but it's not allowed to enter in the Earth atmosphere. It burns up when a while before reaching the Earth atmosphere. अर्थ के एटमोसफेयर में आने से पहले ही जो है वो ये बर्न हो जाता है, ठीक है जी। उम्मीद है कि मेटेरोइड और मेटेओर की समझ। Okay, so then we're having some main characteristics of meteoroids. Now, first of all, this piece of rock or iron, as I told you, rocky or metallic. So definitely it means rocks or irons. Size ranging from few millimeters to thousands of kilometers in diameter. अब इनकी size ranging कहाँ से start होती है? Few millimeters से होती है और thousands of kilometers तक जो है वो इनका diameter जाता है. When they enter the Earth's atmosphere, they become incandescent because of friction, falling or shooting star. तो हम जो है वो इन्हें कह सकते हैं कि ये फॉलिंग स्टार है, शूटिंग स्टार है। तो हम अक्सर फॉलिंग स्टार या शूटिंग स्टार देखते भी हैं। तो ये मेटेरोइड होते हैं जो कि इंटर कर सकते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ अर्थ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वी आर हैविंग अ डायग्राम वेयर वी कैन सी दिस इज अ एस्टेरॉइड एंड वन पीस इज नोन एज अ मेटेरोइड। तो मेटेरोइड वो एक सॉलिड पीस होता है डेब्रिस का ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो मेटेरोइड होता है और ये एज अ होल हम इसको एक एस्टेरॉइड कहते हैं। ओके वेट okay. Okay, now we're having comets. So comets are a body of ice, rock and dust that can be several miles in diameter and revolve around the sun. तो ये बॉडी होती हैं of ice, rocks and dust. अब ये तीन चीज़ों के बने हुए होते हैं. Like as I mentioned, meteoroids are made up of rocky और metallic objects, bodies, और asteroid का मैंने बताया कि rock और metal के बने होते हैं. तो asteroid और meteoroid दोनों सेम चीज़ के बने होते हैं क्योंकि ये होती ही सेम चीज़ है, लेकिन एक छोटा सा पीस अगर हम लें ना asteroid का, वो हम meteoroid कहते हैं, ठीक है। जो उसके बाद comet क्या होता है, comet या तो आइस का बना होता है, या तो रॉक का बना होता है, या तो डस्ट का बना होता है, डस्ट का, ठीक है। और डैट कैन बी सेवरल माइल्स इन डायमीटर। तो अब आपको मैं इसका डायमीटर बता दूं कि ये सेवरल माइल्स हो सकता है एंड रिवॉल्व अराउंड द सन, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इट्स मेड अप ऑफ रॉक एंड डस्ट स्टक टुगेदर विद आइस एंड गैसेस। तो अब इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है कि ये आइस और हम कह सकते हैं रॉक और डस्ट जो है वो स्टक होते हैं आइस और डिफरेंट गैसेस के साथ, तो हम इसको इज अ कॉमेट कहते हैं। समटाइम्स लाइट फ्रॉम द सन हिट्स द गैसेस एंड इट रिफ्लेक्ट्स टू गिव अ ग्लोइंग ट्रेल। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये पीछे से जो लाइन बन रही है, तो जब ये अर्थ सन के साथ जब रिफ्लेक्ट होती है तो ये एक पीछे की तरफ मूव करती है, बैकवर्ड इसकी मूवमेंट होती है, तो इसलिए आपको ये लाइट नज़र आती है, ठीक है जी। उसके बाद हेयर अगर ये पिक्चर देखें तो यहाँ पे ये भी यू गाइस कैन सी। अच्छा ओके, दे गेट अ न्यू टेल ईच टाइम दे गेट क्लोज टू द सन। तो जब भी वो ईच टाइम क्लोज सन के करीब जाते हैं वो, तो उनकी जो टेल होती है वो मज़ीद बढ़ती जाती है, ठीक है। The tail of the comet always point away from the sun, which means कि whenever like if I'm coming close to someone and I'll be moving back again. So आप कुछ उस तरह से जो है वो ये समझें and I'll show you. Meteors and meteoroids. तो सबसे पहले कॉमेट मैं आपको बताती हूँ। कॉमेट आइसी बॉडी दैट रिलीजेस गैसेज एज इट्स ऑर्बिट द सन, ठीक है। एस्ट्रॉइड रॉकी बॉडी स्मॉलर देन द प्लैनेट दैट ऑर्बिट्स द सन। मेटेओर स्ट्राइक ऑफ लाइट सीन व्हेन अ मेटेओराइड हिट्स अप द एटमॉस्फेयर। तो ये अर्थ के सरफेस पाने से पहले ही जो है वो फट जाता है। मेटेओराइड रॉकी और मेटालिक फ्रेगमेंट ऑफ एन एस्ट्रॉइड, कॉमेट और प्लैनेट। और मेटेओराइड
meteor fragment that reach the ground. ये जो ग्राउंड को टच करती है उसका meteorite कहते हैं टी वाला, और meteor होता है वो हवा अर्थ का एटमोसफेयर में आने से पहले हीट अप होकर फट जाता है. meteorite दोनों लाइक ये एक पार्ट होता है एस्ट्रॉइड का ही, जो छोटा सा हिस्सा होता है डेब्रिस, स्पेस में जो डेब्रिस होता है वो होता है. ठीक है जी. और उसके बाद थैंक यू यहाँ पे आ गया, बट आई एम गोना शो यू समथिंग बिकॉज एज आई प्रॉमिस यू गाइज आई विल शो यू हाउ कॉमेंट्स बेसिकली, वो कॉमेंट्स होता क्या मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखाती हूँ. So यहाँ पे आप you guys can see कि asteroids, sometimes called as minor planets, are rocky airless remnants are left are from the early formation of our solar system about 4.6 billion years ago. Most asteroids can be found orbiting the sun between Mars and Jupiter within the main asteroid belt. अब मैं आपको asteroid belt दिखाती हूँ. बेसिकली ये है हमारे पास लाइक ये asteroid belt है. लेट मी शो यू इसका स्ट्रक्चर लाइक किस तरह से है एस्ट्रॉइड बेल्ट का. तो यहाँ पे लाइक यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास सन है, सन के पास मरकरी है, फिर वीनस है, अर्थ है, फिर मार्स है हमारे पास. ठीक है, मार्स, उसके बाद हमारे पास जुपिटर आ गया. चलो ठीक है. तो अब ये हमारे पास पीछे ग्रीक्स है. ठीक है, ये सारा एक ऑर्बिटिंग बेल्ट है जो कि मार्स से लेके जुपिटर तक या सारा को जो है वो ऑर्बिट कर रहे हैं. यू गाइस कैन सी हियर ऑर्बिटिंग बेल्ट. ये जो आपको पर्पल कलर का यहाँ पे शोन हो रहा है ये सारा जो है वो हमारे पास एस्ट्रॉइड बेल्ट है. अब मैं हम लोग so comets are icy small bodies in our solar system that orbit the sun and made up of dust, rocks and frozen gases. तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो आपको लाइट पीछे नज़र आ रही है ना, ये आप कह सकते हो कि इसकी आयन टेल होती है. ठीक है, और एक इसकी डस्ट टेल होती है. ठीक है जी. और ये हाइड्रोजन इन्वेलप होता है, न्यूक्लियस होता है, इसका कोमा होता है, सोलर विंड होती है. तो ये सारा आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे, बट यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाऊँगी ना वो यही होगा. और होप सो कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी. और आई ट्राई किया अपना, आई एम वर्किंग ऑन कि अगर मैं आपको साइंस या मैथ्स पढ़ा रही हूँ तो वो भी मैं आपको उर्दू में पढ़ाऊँगा कि आप कंफर्टेबल होकर सीख सको. बिकॉज अगर आप कुछ करते हो लिखते हो तो वो तो आप इंग्लिश में लिखोगे डेफिनेटली, लेकिन माई वर्क इज़ टू आपको समझाऊँ कि तो दैट्स वाई आई ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक इन इंग्लिश डू बोथ विद यू इवन इन साइंस, बट इन इंग्लिश वी डेफिनेटली हैव टू स्पीक इन इंग्लिश विद यू. एंड होप सो यू लाइक टुडेज वीडियो. बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.